conditional statement in शीशा. Conditional statement basically क्या होता है? Return the expression on the basis of condition. Yes or no? Boolean value return करता है either true or false. So types of conditional statement. First, simple if it work on single condition. If else work on two condition. Nested if else work on multiple condition. And ladder if else work on multiple condition again. And switch case work on multiple twices. Or nested switch work on nested multiple twices. Next example of simple if. Next create method test simple if. By some condition, if num is less than equal to 100, then it should bring India. Right? Only one condition. The value of num that will be less than 100, it will print only India. If value is not less than 100, it won't print anything, right? क्योंकि यहाँ पे कोई next condition नहीं है. अगर next condition होता तो वो उसे चेक करता, लेकिन next condition यहाँ पे नहीं है. तो मैं अगर वैल्यू यहाँ पे 100 डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट? अनिल आउटपुट क्या आएगा? 100. अगर आप 100 से एबव वैल्यू डालोगे तो क्या आउटपुट आएगा? यस, कुछ नहीं आएगा. अगर आपने 99 डाले तो अगेन क्या आएगा? इंडिया. क्यों? क्योंकि आपने जो कंडीशन देखा है नम लेस देन इक्वल टू पे आपका इंडिया आएगा और इससे जो भी एबव वैल्यू होगा उसको कुछ परफॉर्म नहीं होगा. दिस रिटर्न बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स. If condition will return true, if value of this that will be true, else it return false. And the next, that is example of if else. if else में हम दो कंडीशन को टेस्ट करेंगे. Again I am declaring num here. If num is less than equal to 100, then print India. Else print Bharat. Right? If num is less than equal to 100, then print India. Else print Bharat. Let's test it. When you pass 100 here, it will print India. When you pass 102, it will print Bharat. Okay. So this will basically work on two conditions. Either the num value will be less than 100 or it will be greater than 100. So if the value of num is less than 100 or equal to 100, that will print India. If the value of num is greater than equal to 100, that will print Bharat. Like the next condition, that is nested if else. ये तो बिल्कुल बेसिक है, जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है.
नेस्टेड वर्ड बेसिकली होता क्या है? if inside if, that is called nested if. Loop inside loop, called nested loop. Array, sorry, class inside class, that is called nested class, right? So if inside if is called nested if. So let's apply if first. Or value of num is less than equal to 100, then again another if, and this will check num is greater than equal to 50, and this is the logical operator, return true if both conditions true, right? And num is less than equal to 100, then if it in India, else, let's just print Bharat, and the outer if corresponding else, it should print Hindustan. So let's tell Himanshu when it will print Hindustan. हिमांशु हिंदुस्तान का प्रिंट होगा 50 से कम है तो इंडिया 50 100 टू का डालूंगा तो क्या आएगा क्या सर 100 से ऊपर डालोगे तो हिंदुस्तान क्या बात है और इफ आई विल एंटर 49 देन कितना सर 49 49 इंडिया आर यू श्योर जी सर बट 49 is not greater than equal to 50 then how to print India 49 50 से बड़ा नहीं है then इस केस में कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा तो फिर क्या दिखाएगा right if you enter 100 in that case it will print India तो कहने का मतलब ये है कि there are multiple conditions we are testing here we can also use nested inside nested operator let's put and operator again देखिए आपका लॉजिक स्टार्ट होता है and num is not equal to 100. Again, till if I will pass value of num is 100, then what is the output? Anil. If I pass value of num is 100, then in that case, क्या output आएगा? Between India, भारत और हिंदुस्तान? India. Okay, again India. That is भारत. Why? num की वैल्यू हमने 100 ले ली. हाँ, num की वैल्यू 100 ले ली है, तो यहाँ से तो true है, पर 100 is equal to true, लेकिन not equal to उसने क्या कर दिया? False. So true and false, that is false. ठीक है? अगर यहाँ पे भी equal to रहता, then in that case India print होता. लेकिन यहाँ पे not equal to लगाया है, then we evaluate false. If num की वैल्यू अगर आप 100 ले रहे हो, तो 100 is not equal to 100, it means false. क्योंकि 100 100 के equal है, yes or no? तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा? False. यहाँ से क्या रिटर्न होगा? True. So if it is returning true, and there is an and operator in between, then it will check both of the conditions that should be true. And if the first is true and next is not true, then in this case, this whole condition is not true. So again, the part of else gets executed and written Bharat. ठीक है जी, ये आपका nested if else हो गया. Ladder if else कैसे define करते हैं? Let us the ladder if else. If marks is greater than equal to 70, then print grade A. Else if marks is greater than equal to 60, then print grade B. Else if यहाँ पे लगेगा ladder के केस में marks is greater than equal to 50, then print grade C. Else print fail. ठीक है? अगर marks 70 above है, it should print grade A. अगर marks 60 और 20 के बीच में है, it should print grade B.
अगर मार्क्स 50 और 60 के बीच में है it will print grade C और मार्क्स अगर 50 below है that will print fail. ठीक है. If I will call this method passing value 49, then what is the grade? Anil? Fail. Are you sure? Yes, that will be fail because 49 is less than 50, right? If I will pass 71, then output क्या आएगा? Grade. It's very clear because 71 is greater than 70. If I will test 69, then what is the output you want to show? Grade B. Are you sure? Yes. That is fine. If I will pass 56, then grade Anil. C. Good. So this is based on ladder if else. Ladder if is called. So the first condition that will be false, it will check the next condition. The next condition again is false, it will check the next condition. If all the if condition gets false, it will execute the conditions. Okay. Again the next, that is the switch case. यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. Choice num1, num2. I want to perform arithmetic operation using switch case. The switch work on choice, whatever passing choice you have. Let's pass the first choice. One, case one gets executed, and it will print add is plus num1 plus num2. And every case that must be break, then again copy this statement and press multiple times. Right. Change it case 1 to case 2. Change here add subtract and also operator that is minus. Here that will be star, divide, division h, and here that will be multiplication. And the same case that would be 3 and 4. And 1 to 4 case that would be default case. It will print invalid choice. Okay. Define the case statement. If we enter case 1 and choice 1, 2, 3, 4, accordingly it will print the add, subtract, multiplication, division. After enter choice value apart from 1 to 4, it will print you invalid choice. Alright. So let's call this test switch. To call test switch, we need to declare three variables num1, num2, and choice. User input here. Enter two integer value. Num1 that will be and solve every time. Let's get the user input here. And num2 value of num2 is also coming from user input. The value of user input. And from the user to enter choice. Enter your choice. Now let's before that print the menu for user. So let's print menu here. One for addition. Similarly, two for subtraction, three for multiplication, four for division. Change it. Two for subtraction and three for multiplication and four for division. That's the choice and storing variable.
function dc dot h twice switch and pass this three variable num1 first pass twice, then num1, then num2. When you run this application, what's giving here? No declared choice here. Okay, choice already declared about the code. So let's run it. Now it is asking for two integer number. So let's enter two integer values here, 20 and 10. So this is the menu. You want to perform addition, you want to perform addition, then press choice 1 and will bring add. This is running only one time. Why? Because I have not used loop here. So to repeat many times, we need to use for loop. So use for loop here. I want to repeat it 5 times. So let's run the for loop 5 times and put method inside the for loop, which will ask enter your choice again and again. This is your initial two integer number. If you press 1, it will display addition. If you press 2, it will display subtraction. If you press 3, it will display multiplication. If you press 4, it will display division. If you press apart from 1 to 4, that is 5 or 6, it will display fractions. एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक मेथड बनाया जो आर्गुमेंटाइज मेथड है, तीन आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर किया, चॉइस नंबर और नंबर। स्विच सिर्फ इंटीजर चॉइस भी काम नहीं कर सकता, ये कैरेक्टर भी काम कर सकता है। सो चॉइस की वैल्यू अगर 1 है, इट मींस द स्टेटमेंट दिस विल गेट्स एग्जीक्यूटेड। इफ चॉइस की वैल्यू 2 है, देन दिस ओनली गेट्स एग्जीक्यूटेड। इफ चॉइस की वैल्यू 3 है, दिस ओनली गेट्स एग्जीक्यूटेड। इफ चॉइस की वैल्यू 4 है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। 1 to 4 कोई भी चॉइस नहीं है, फिर स्टेटमेंट चलेगा। इसके बाद तीन वेरिएबल बनाया, यूजर से इनपुट लिया नंबर नंबर में, एक मेनू दे दी यूजर को समझने के लिए कि क्या यूजर करना चाहता है, और फिर चॉइस को हमने लूप थ्रू रन करवा दिया मल्टीपल टाइम्स। बार बार इंटरवल चॉइस मांगेगा और अकॉर्डिंगली आपका एक्शन परफॉर्म होकर देखता रहेगा। हाँ, ये जो स्विच और जो बनाया है उसके आर्गुमेंट डिफाइन कर देते हैं, इस वर्जन में हाँ, यहाँ पे तो वेरिएबल बनाया हमने चॉइस नंबर और नंबर। अब चॉइस की वैल्यू आपने 1 डाली है वहाँ से, तो चॉइस के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर स्विच चॉइस के अंदर 1 है, इट मींस इस केस में जो 1 केस होगा वो सेटिस्फाई होगा। ये प्रीडिफाइंड है, प्रीडिफाइंड, ठीक है, केस जो है प्रीडिफाइंड है, बाकी 1 प्रीडिफाइंड नहीं है, 1 हमने वैल्यू हमने पास किया, बाकी ये सब प्रीडिफाइंड है। केस इस बार प्री आपने सी में भी तो यूज किया होगा, इसे याद होगा, ठीक है। तो ये आपका स्विच केस है। नेस्टेड स्विच केस जिस तरीके से हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज की थी इफ के अंदर एक, वैसे ही आएगा। एक बार उसका भी एक बार एग्जांपल दिखा देता हूं। लेट्स यूज द नेस्टेड स्विच केस। एग्जांपल ऑफ नेस्टेड स्विच केस, choice switch choice if case is 1 at last enter your ch for nested switch and store ch in character type of variable, and for storing character we just need to use convert. You need to convert this character which is number.to console.readline. Again you switch here and pass ch. Let's define here case A and console.writeline, that will be Monday. Let's break it, and default invalid ch. Let's also break it, and for the outer case we need to define break here and then default case, that will be invalid choice. ठीक है, अगर चॉइस की वैल्यू 1 है देन केस 1 सेटिस्फाई होगा, तभी आपसे ch मांगेगा,
और अपने सी एच में एक करेक्टर एंटर की है देन प्रिंट मंडे। और अगर आपने सी एच में एक करेक्टर प्रिंट नहीं की तो दिखा देना इनवैलिड सी एच। अगर आपने चॉइस सी ए नहीं चॉइस सी वन नहीं लिया तो डायरेक्टली इनवैलिड चॉइस दिखा देगा। लेट्स कॉल इट switch. I'm passing one error. It will ask for enter your CH. If I will enter A, it will print Monday. If I will enter B, it will print valid CH. If I will pass to 2, it will directly print valid. So I say 4 bars and C. So switch inside switch, that is called nested switch. तो स्टेप के स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। अब उसमें बहुत सारा मैं अभी एक्सरसाइज अभी बनाने के लिए दे देता हूँ और तब तक आपकी जो लैपटॉप है उसमें आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें मेल भी कर दूंगा। Let's go here.